Hi students, welcome at KitCan Digital Learning. I am your English teacher. Today I am presenting lecture number 1 and the topic is Back to School. From your English book We Learn English Class 3 published by Oxford University Press. Before starting our today's topic, I would like to advise you a few tips for effective learning and takes maximum benefit from KitCan Digital Learning. Like and subscribe your school channel so you will not miss any video. Carefully listen and watch video from start to end. Find out the answer of the question from the video. You have to watch the video multiple times until you have find the answer. Let's start our topic. Our topic is unit number 1, back to school. Getting ready for the school. Neha and Nasir are very happy the holidays are over. नेहा और नासिर दोनों ही बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी छुट्टियां जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। स्कूल इज़ ओपनिंग टुमारो। दे आर पैकिंग देयर बैग्स। दे हैव न्यू पेंसिल्स, इरेजर्स एंड बुक्स। नेहा एंड नासिर जो हैं वो दोनों अपने बैग्स पैक कर रहे हैं फॉर द स्कूल और उनके पास पेंसिल्स हैं, इरेजर्स हैं न्यू और बुक्स हैं। द यूनिफॉर्म आर क्लीन। उनकी यूनिफॉर्म्स जो है वो नीट एंड क्लीन है। Now we are moving towards the conversation between Nasir and Neha. Nasir is saying, I am packing my bag, and Neha is answering him that I am also packing my bag. नासिर नेहा से ये कहता है कि मैं अपना स्कूल बैग पैक कर रहा हूँ और नेहा भी जवाबन उसे ये कहती है कि मैं भी अपना स्कूल बैग पैक कर रही हूँ। नासिर सेज आई हैव न्यू पेंसिल्स एंड इरेज़र। नासिर कहता है कि मेरे पास कुछ न्यू पेंसिल्स और इरेज़र्स हैं। तो उसके जवाब में नेहा उसे कहती है लुक एट माई न्यू बुक्स। मेरी न्यू बुक्स देखो। नाउ नासिर सेज टू नेहा लुक एट माई न्यू यूनिफॉर्म, इट इज़ सो स्मार्ट। मेरा न्यू यूनिफॉर्म देखो, ये कितना स्मार्ट है। नेहा सेज आई हैव 2 बॉक्सेस ऑफ कलर पेंसिल्स। नेहा के पास कलर पेंसिल्स के 2 बॉक्सेस होते हैं। नासिर सेज वी विल एंजॉय यूजिंग आवर न्यू थिंग्स। नासिर उसे कहता है कि हम अपनी न्यू चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। नेहा और नासिर का स्कूल आफ्टर वेकेशन अगेन ओपन हो रहा है जिसकी वजह से ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। आई होप यू विल बी एक्साइटेड टू आफ्टर योर वेकेशंस विल एंड. You will have new things to use like pencils, erasers, and your uniforms will be new and you will be in your new class. Now you have to find out the question, which is why are Neha and Nasir happy? Neha और Nasir वो दोनों क्यों खुश थे और why are they so excited? Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic. Don't forget to answer the question and write the answer of this question in your summer vacation copy or journal within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks, as total marks of this question will be added in your final term exams based on your reply of all questions. The marks of these questions are 10. Hope to see you in the next topic and learn more new concepts. Thank you. Bye bye.